Hello everyone, welcome to another session of Lex Dialogues. This is our first session of this year. I would like to wish you all Happy New Year 2026, and I wish let this year bring you a good health, good life and prosperity. So let's begin today's session. Jyoti, what is your New Year resolution? My New Year resolution. My New Year resolution is कि जो भूलटा मु लास्ट प्रीवियस ईयर करी से भूलटा जमती आउ ए वर्ष रिपीट न हो मीन्स आई व्हेन आई एग्जामिन माय लाइफ सो से भूलटा जमती आउ तो रिपीटेड न हो आई नो द एंड बट द फैक्टर इज मु से जो रास्ता रे चालुची मतलब मीन्सटा माने ये जो रेजुलेशन मीन्सटा को मु तार प्रॉपर पाथ पाउनी मु जानी छी गोटे जिंसटा भूल बट माने से जिनटा ऑटोमेटिकली होदर इमोशनल एस्पेक्ट हो कि माने से जिनटा रिपीट हो जाउची बार बार तो ऑल्दो आई हैव टेकन ए न्यू रेजुलेशन बट से रास्ता रे केमती चलीबार अछि से जिनटा मते टिके क्लियर माइंड रे आइडेंटिफाई करियार अछि जोटा कि मते रिपीट करियार नै बार बार ओके सो गुड स्टार्ट हम कोई बहुत रेजुलेशन ते तमे करि छ एंड द कॉन्टेक्स्ट इज कि मोगोड जिंस जानी छी दिस इज नॉट करेक्ट बट knowingly unknowingly I am repeating that हाँ मु अलर्ट हो गली knowingly मु करूनी but unknowingly भी बहुत समय रे से जिंस द्वारा हो जाउछ yes definitely correct so that is our tendency see human tendency गोटे कोट टे रखी छी okay I like what that quote says using others is a sin okay why should I wish to use another that's a very known dialogue of famous writer Kamano Kumei so he says like he knows this is a sin okay but each day he wishes to use another यार कॉन्टेक्स्ट हला मु जानी छी कि काहा को मते यूज करबा कथा नुहे बट ईच डे मते जदी किछि प्रोग्रेस करियर अछि किछि पाइबार अछि या फिर ऑब्जेक्टिव पर सैटिस्फाई हो ओके से रीजन रे जतले भाबुची आई डोंट नो इन व्हिच पाथ आई शुड गो तो मु सतले मो माइंड रे चले कि हु इज द राइट गाय एंड मु ताको यूज करूची तार दीटा पर्सपेक्टिव अछि फॉर अ गुड मीन मु गोटे भलो एस्पेक्ट रे जनकर भलो जिंस को कैरी करिया पे जदी खोजुची दैट इज फेयर बट मेजॉरिटी टाइम रे हमें हमर ऑब्जेक्टिव सैटिस्फैक्शन पे वी मेक समवन अ मीन ओके या हमें ताको गोटे जरिया बने दो कि मोर ऑब्जेक्टिव ता हे छ yeah okay so in that context like tame jemti कहले कि मोर किछटा भूल को म सजड़े को चाहू छी and I'll look after that but still that stays or that reflects in some actions in some actions it is reflecting okay so eta को हमें बे ethical unethical आडू को नहीं परिबाटी the reason is like it's there सेटा back end रे अछि I got it so overall when our moral says this is right this is wrong we know what is right what is wrong but interpretation बड़े बहुत समय रे we assume it to be right definitely so that is the thing तो हमें जदि हमें एटा गोटे एथिकल स्टैंडर्ड ऊपर को नेकी जाउछे तो चलंतु एई डिलेमाटा केवल आमर नुहे कि मोर नुहे मोस्टली बहुत पिलांकर सोसाइटी रो तो एथिक्स को डीप डिगिंग करिकी गोटे पैरेलल येटा कॉन्स्टिट्यूशन से तो पैरेलल एथिक येटा स्टार्ट करिकी तो हमें टिके डीप रे जानिबा व्हाट इज द रोल ऑफ एथिक्स इवन व्हाट इज एथिक्स yes we are like empty kariba let's start another series from today this is the first session of this year so why not to start another series a new series with some values yes so the values sense ram jeto kotha hoche next series would be on professional ethics abe be हम ethics kotha hele let's understand what is ethics and being a professional students let us understand like how ethics is connected to our profession so inherently like ethics and then professional ethics are characteristics kana and so to start kariba ajira series so let's go on this so tom kon lagchu what is ethics on a simple layman term रे मु जदी कहबी गोटे जिंसरो ठीक आ भूल रो विचार करिबा ही नैतिकता दैट इज एथिक्स whether a thing is right or a action is right or wrong to decide whether action is right or wrong that is ethics
ताको टिके जदि आमे ओपन करबा टिप जीवा एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस where we study human conduct माने आमे एनिमल मानकर येटा को तांको पाखरे भावना और चेतना शक्ति नाही गोटे सिंह जंगल रहउची माने से हरिणर शिकार करिवो किंतु गोटे ह्यूमन पाखरे सेति चेतना शक्ति अछि जहा कि ताको एनिमल प्रवृत्ति रु अलगा बनाउची तो मनीष पाखरे से चेतना अछि से डिसाइड करि परियो गोटे एक्शन दा तर ठीक और भूल तो ethics is all about the study of the human conduct. Ethics is all about study of the human conduct, whether the conduct is right or wrong. तो तामाने मु एटा कहि परिबी कि like ethics is it's all about what is morally right or wrong Yes. and whether it's acceptable. Acceptable. Right. तो जदि it's all about morally right or wrong and acceptable. Okay. तो एथिक्स और मोरल भीतर डिफरेंस टा कोन रहला मु एटा कहूची कि मोरली दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग एंड मुझे सेटा एक्सेप्ट करती दैट गोस टुवर्ड्स एथिक्स तो ताले मते एथिक्स बुझिया को गला को मोरल इज कमिंग तो मोरल कोन एंड एथिक्स कोन ता भीतर रिलेशन कोन ओके देखो व्हाट एवर वी इनकलकेट माने आमे समाज रु जहा नौच आम भितर को सेटा आम भितर गोटे गोटे वैल्यूज भलिया रहउची कि भाइस भलिया रहउची भलो गुण ले वैल्यू खराब गुण ले भाइस जेते बेले समथिंग आई मेजर फ्रॉम माय इनर कंपास ए जिंसटा मो मोरालिटी माने आज ए इंडिविजुअल को जेते बेले एथिकल स्टैंडर्ड टा को मु माने मेजर करू सेटा वाला मोरालिटी किंतु जेते बेले गोटे सोसाइटी आज ए मोरल टाकू सोसाइटी आज ए मोरल पर्सपेक्टिव रे देखु सेटा होचे एथिक्स माने सिंपल एमते कहया को चाहिए सपोज गोटे जिंस मते करबा को भल लागे कि गोटे वेलफेयर एक्टिविटीज मु करूची समथिंग आई एम डूइंग तो सेथिरे कोन एटा मोरल सैटिस्फैक्शन मिलला सेटा मो मोरालिटी किंतु वेलफेयर एक्टिविटी आज ए सोसाइटी एक्सेप्ट करे वेलफेयर एक्टिविटी समझे तो सेटा सोसाइटी में गोटे एथिकल वैल्यू तो मोर मोरल और सोसाइटी एथिकल स्टैंडर्ड अलाइन हो गला तो इट इज गुड मनकर आउ गोटे एग्जांपल देबी राजा राममोहन राय थिले ही वाज द फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया तांकू सेते बेले कोन थिला तांको मोरालिटी थिला जे सती प्रथा ठीक नुहे फॉर द व्यूअर सती प्रथा माने सेते बेले जेतले तांगर स्वामी माने मरि जाउतले आई एम टॉकिंग अबाउट 17th सेंचुरी बीसी 17th सेंचुरी बीसी 18th सेंचुरी बीसी तो सेमान को फोर्सफुली अग्नि रे दाह कर दिया जाउतिला कि फोर्सफुली सेमान को माने वोमेन मान को बहुत माने निर्यातना दिया जाउतिला तो राजा राम माने स्टूड अगेंस्ट इट बट सेते बेले एथिकल स्टैंडर्ड थिला जे सती प्रथा वाज एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी तो गोटे लोकर मोरालिटी आउ सोसाइटी एथिकल स्टैंडर्ड डिफर करि पारे तो व्हेन यू टॉक अबाउट द सम गुड वैल्यूज टू द इंडिविजुअल दैट इज मोरालिटी जेतले सोसाइटी पर्सपेक्टिव जीवा सेटा हला एथिकल स्टैंडर्ड ताले को सम अप करिया पे हम एमती कहि परबी कि लाइक मोरल इज बेसिकली द इंटरनल and our personal belief what is right or wrong and basically it develops with time with our inherence yes and upbringing हमें जो कल्चर रे अछि आ हम conscience तो ए सब को नै कि जो वैल्यू टा डेवलप हुए तो that is like the moral the internal thing in a perspective of a singular person morality is same jinso jetole translate हुए on a bigger picture towards the society and we create a framework to establish this moral right or wrong and acceptance of that fact तो say condition this becomes a ethics to the society तो moral ethics विषय रे कथा हेले हां एबे we are all like legal students law studies definitely so how this ethics is connected to our profession and professional ethics ro kete value achi like should we have to maintain that standard or whether that standard need to be like that behavioral standard basically jota me ethics kotha कहउचे so that need to be maintained to the highest degree of practice देखो माने मु गोटे बढ़िया एग्जांपल देबी सचिन तेंदुलकर वन ऑफ दी माने फाइनेस्ट क्रिकेटर माने गॉड ऑफ द क्रिकेट तांको तांकर किछा मोरल स्टैंडर्ड थिला जोटा सोसाइटी भी हो कि तांका बापा होंदु से प्रॉमिस नै थिले जे यू विल नॉट प्रमोट अल्कोहल्स और लाइक गुटखा वगैरह इवन गोटे तार गोटे न्यूज भी अच्छी ही वाज ऑफर्ड इन 1990s 200 crore समथिंग अमाउंट वाज ऑफर्ड कि do a ad for the alcohol beverage company but he clearly refused
clearly reproved सेटा तांकर he was a profession cricketer भाबंदु For other cricketers, he could have done this, but एबे he देखंतु preferred basically कि no, it will put a like an impact on the society where like that society is giving me a value and I'm been achieved something and been celebrated by these people. For this collective people, I shouldn't do anything wrong which will like tarnish or like or compromise the expectation of these people from me. Obviously kana sie jodi sele the promote moral kari setting high thila for that reason like he has opted that like तो सेति पे सी आज स्टिल पूजा पाउछंती despite being 10 years retirement ପରେ भी he was phrased as a human being as a person तो महाभारत रे गोटे हमर श्लोक अछि आत्मना प्रतिकूलनानि परेशामना समाचार तमे जो जिंसटा निज सह हेबा को चाहू ना से जिंसटा अन्य सहित कर नाही माने जोटार हम शकुनी दुर्योधन साइड रे थिले ऑल्दो दे आर वेरी टैलेंटेड पर्सन माने निज प्रोफेशन ने से माने बहुत उच्च कोटिर स्किल सेट थिला तांको परे दुर्योधन वन ऑफ द फाइनेस्ट गदा युद्ध थिला शकुनी वाज ए डिप्लोमेट हाई लेवल डिप्लोमा जा कृष्ण को पाखा पाखी तुलना कर देथिला बट दे डोंट हैव एथिकल स्टैंडर्ड्स सेति पई तो दे सेतले जो तांकर परिवारटा कोलैप्स कोन पे हैला महाभारत युद्ध कोन पे हैला इफ शकुनी दुर्योधन को बळे दुर्योधन को जे एथिकल स्टैंडर्ड थांता ऑब्वियसली से माने पांडवों भले आज पूजा पाउ थांते सत कथा तो एथिक्स इज ए वर्च्यू दैट रिक्वायर्ड इन एनी प्रोफेशन सब प्रोफेशन ने एथिक्स रो वैल्यू रही छी बिकॉज़ विदाउट एथिक्स नो प्रोफेशन कैन नॉट कॉल्ड इट एज ए नोबल प्रोफेशन. Let me go back to our situation. Okay. Being a part of like a legal profession, what do you think? Like legal profession is a noble service or it's a business now? Yeah, I'll repeat that one again. What previously just I've told. When you practice legal profession, obviously you are representing someone. It is not only your fight. You are representing someone. He has invested all their trust, money, all his hope to the advocate, respective advocate. तापर से लोकर दायित्व रोचे से लोक को न्याय दबा न्यायटा गोटे छोट जिनस नुह बहुत बड़ जिनस तो सेठी जदि आम मनी ओरिएंटेड होचे बिजनेस ओरिएंटेड होचे एथिकल स्टैंडर्ड को आणुने तो हाउ कम इट विल कॉल्ड ए नोबेल प्रोफेशन. आपण गोटे लोकर होप तार त्याग सबु जिनस तार लाइफ रो स्टेक निज हाथ को नेले से लोग ठीक ठाक भूल था किंतु आपण ताकू जस्टिस देवा दायित्व होची आपणकर तो किछिटा नोबेल प्रिंसिपल्स न रहिले एथिकल स्टैंडर्ड्स न रहिले इट विल नेवर कॉल्ड ए नोबेल प्रोफेशन. सो विदाउट एथिक्स इट इज कंप्लीटली बिजनेस विथ एथिक्स इट इज द नोबेल माने नोबेल प्रोफेशन भीतर भी नोबलेस्ट माने बहुत भलो प्रोफेशन आई विल से. So that means like there is a strong relationship of ethics with law. Yes, ethics with law. But one thing I'll say, law is a minimum standard. Means मु जदि किसी गोटे जिनसटा रेगुलेशन करिवार अछि गाइडलाइंस बनियार अछि मु से गोटे लॉ बनेबी गवर्नमेंट. बट लोक मानक भितरे से जो माने नैतिकता ता आनिबा दायित्व एथिक्स रो. सो एथिक्स इज ए हाईएस्ट वर्च्यू माने जेन हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढिथिले गवर्नमेंट मेक लॉज और पॉलिसीज और कॉन्स्टिट्यूशन बट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नॉट देयर अमंग द पीपल. जो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट ए बुक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज लोक मान भीतर केतिक अछि दैट मैटर. तो लॉ इज जस्ट सेट ए मिनिमम स्टैंडर्ड कि आपन को एटलीस्ट एतिक तो मानिबार अछि बेयर मिनिमम एतिक ही मानिबार अछि. बट एथिक्स ऑलवेज एंश्योर द हाईएस्ट वर्च्यू हाईएस्ट स्टैंडर्ड जोटा कि गोटे जस्ट सोसाइटी राम राज्य सपोज लाइक गोटे आम रामायण गोटे येटा अछि रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर बचन न जाए. तो सेठी लोक माने कोन निजर माने कमिटमेंट पे जीवन दे दोतिले सेता बेले थिला बिकॉज़ दैट वाज ए एथिकल सोसाइटी. बट वर्तमान देखो आपन जदि गोटे जिनसटा को जदि भी साइलेंट भी रहि जाउछंती आपन सेटा अनएथिकल गोटे जिनस को अपोज करनांती माने दुर्नीति हो कि अन्याय हो ताको जदि अपोज भी करनांती आपन के क्वेश्चन करि परिबेनी यू आर ए लॉ अबाइडिंग सिटीजन स्टिल. But as a ethical person, does it is allow? You should mean resist those. माने सेमान को आपनो न्याय ऊपर आपनो लड़िबा कथा. तो सेमती कथा कि आपन जदी एथिक्स को हाथ रखु नांती तो हाईएस्ट वर्च्यू आपन केबे सोसाइटी रे आनी परिबे नाही. Okay. Yes. So do you think like there could be scenarios
which you can tell like it's ethical but not legal, or there could be situations which are unethical and even not illegal. ସେମିତି ହଁ, କ'ଣ instances ଅଛି? या चल गोटे डायग्राम रे बुझिबा गोटे माने चारटा क्वाड्रेंट अछि हमें सेटार बुझिया सेटा बढ़िया लागियो सपोज It's all about like हमें जो कथा है legality and ethics. So there could be scenarios or a combination. बट एबे हम क्वाड्रेंट को पळे आसीबा It's suppose again another 4 quadrant story. yes like it is a x axis and now it is yeah it is a like it is a y axis मोर जते मने पड़ जी पिला एटा x axis तो x axis रे हमें रखिबा ethics को सपोज y axis रे law को रखिबा Okay. अच्छा तो एई क्वाड्रेंट रे इट इज एथिकल And legal. एंड लीगल तो एई क्वाड्रेंट रे इट इज अनएथिकल No, that is ethical and ethical unillegal. okay हाँ yeah Ethical, illegal. illegal okay a quadrant रे it is unethical illegal Right. unethical illegal a quadrant रे it is unethical And illegal. unethical but Legal. legal legal Right. okay तो ये जिनसटा तो हमें समझ जानी चाहिए अनएथिकल अनलीगल वेरी इजी All negative works like dowry which is unethical also illegal like human trafficking Human trafficking. माने सब नेगेटिव All एक्टिविटीज negatives. गुड हाँ. Big sins. बिग सेंस एथिकल एंड लीगल एटा भी सहज माने समथिंग लॉ Like कंपैरिजन सॉरी वेलफेयर we are एक्टिविटी doing like all welfare activities. someone is paying tax legally माने जो माने वेल सिटीजन लॉ ऑफ कंपैरिजन वेलफेयर ए दिटा तो इजी नाउ डिफिकल्टीज बिटवीन दिस टू Correct. क्वाड्रेंट तो गोटे जिनस कहते अनएथिकल हो बट लीगल आमर जानते इनकम टैक्स रोचे कि आम टैक्स स्ट्रक्चर जो रोचे तादेह बहुत सारा लूप होल्स रोचे तो कंपनीज मैंने बहुत सारा अर्न करती बट भल भल चार्टर्ड अकाउंट धरिकी बहुत सारा लूप होल तो टैक्स अवॉइडेंस कहते टैक्स अवॉइडेंस. The classic example of unethical and legal because there are loopholes and all the charters and legals they know use the loopholes where so to- they are not bypassing law but they are helping these guys Meaning avoid within tax. the limitation of the law they use the law to accommodate the unethical- loopholes yes. जोटा अनएथिकल कौन पे बिकॉज जेहेतु से मैंने प्रॉफिट ऑन कर कहाटू ऑन कर सोसाइटी टू जदि सोसाइटी टू से प्रॉफिट ऑन कर इट इज देयर बेसिक ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फंडामेंटल ड्यूटी टू सोसाइटी से रिटर्न करेंगे गोटे ट्रस्टीशिप मॉडल हिसाब से जोटा गांधीजी मॉडल थिला बट से प्रॉफिट टाको निज पाखे रखुचंदी वेरी मिनिमल अमाउंट दे Pay towards इनवेस्ट tax. जोटा कि इवेन लॉस भी देखाती गोटे फॉल्स ये करके देखाती तो टैक्स अवॉइडेंस तो बर्तमान जानीपारे अनएथिकल होगला बट लीगल ठीक अच्छे बर्तमान एथिकल बट इलीगल इट इज ए वेरी डिफिकल्ट थिंग तो आप देखिए गांधीजी जितेबाला आमर सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट कले सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट आम से गवर्नमेंट कहला ब्रिटिश वाज आवर गवर्नमेंट तो आज इट वाज इलीगल टू कॉल ए मूवमेंट सच ए पैन इंडिया मूवमेंट इट शुड बी इलीगल बट गांधी कौन करते इंडियंस मानकर माने जो डिग्निटी टाको एनश्योर करने कारण लवण सत्याग्रह से मैंने कौन कहते तुम लुण मारी पार ना बट सॉल्ट इज ए बेसिक माने नीड ऑफ कॉमन पीपल आम निज समुद्र लुण मारी पारूनी किंतु मैनचेस्टर बड़ बड़ माने जो दामिका लुण किणी खाया पड़ो तो इट वाज ऑन माने ब्रिटिश सरकार एटा अनएथिकल दिला मोरल ग्राउंड रे इट वाज बट इंडियंस को एटा एथिकल दिला बट इट वाज इलीगल बिकॉज गवर्नमेंट वाज देयर ब्रिटिश गवर्नमेंट थिला तो सिविल डिसओबिडियंस मूवमेंट हे गला यार आ गोटे भल एग्जांपल एबे करंट कॉन्टेक्स्ट रे दे परिबी कि एबे जो सब इश्यूज होची ताकु नै जो प्रोटेस्ट करा होची एंड इफ यू आर डूइंग अ प्रोटेस्ट विदाउट टेकिंग परमिशन ऑफ लॉ so that is a good example of like ethical and illegal ethical in a perspective like you are doing for the society and society ro betterment ପାଇଁ କରୁଛ and you are protesting you are raising a concern that is ethical
but as you haven't taken permission of the law, that is like it's makes जोटा it हमरा illegal. आरावली मूवमेंट रिसेंट केस रे हितला आपण देखियो आरावली टा गवर्नमेंट एज ए लॉ पास कर देला बट सिविल सोसाइटी इज सो आवर दे वांट टू प्रिजर्व आरावली सो दैट्स व्हाई इट वाज ए एथिकल थिंग दे शुड प्रोटेस्ट आल्सो ऑल्दो इट वाज इलीगल the strike was called illegal but it was ethical standard very recent example aravali movement was recently what has happened तो सेमती हम रोटे जे हेंस डिलेमा अछि आपण हेंस डिलेमा रे देखिबे लाइक हम व्यूअर्स मानको भी कहया को चाहिबी हेंस गोटे माने ही वाज ए काइंड ऑफ ए पर्सन जे बहुत गरीब ये थिला बट ही लव्ड हर वाइफ वेरी मच तो ता वाइफ कोन थिला बेड रिटर्न थिला हॉस्पिटलाइज हेतिला तो हेंस वेंट टू ए केमिस्ट हेंस गोटे केमिस्ट पाकू गला तो ही बेग्ड कि भाई औषध किसी सस्ता रे दे दे बिकॉज हेंस सेतल से मेडिसिन टा अफोर्ड करि पार न था बट द केमिस्ट से तो मना कला ना भाई मु देबिनी तो एठी जदी देखिया बोले आइदर हेंस ता वाइफ को बंचाय पय चेष्टा करिवो अदरवाइज तार जो मोरल वैल्यूज अछि से गुडा को माने कहबो नले स्त्री वाइफ को मरि जिया को दबो तो और से चोरी करिवो compromise morality and he will like steal the medicines तो भाबंदु एथि आइदर से जदी चोरी करूची गोटे लाइफ सेव करिया पे तो ऑब्वियसली इट इज एथिकल आ जदी देखिए हमें चोरी टा को देखिबा so do you think like it's all about like the degree of crime or the degree of like not the degree of crime I'll just say on the one thing you cannot put universal means ethics some standards are like universal standard some are like relative standards like गोटे जिंसटा को हमें सब context समान देखि परिबाने although stealing is a unethical thing or it is a illegal crime but गोटे लोकर जीवन टा को बंचाया पे जदी प्रायोरिटी करा जाए तो obviously some context is ethical like killing a terrorist it is ethical but killing a person is unethical also तो it depends अपन सब जिंस गोटे ये देखि परिबेनी so that's why ethics varies ethics is time and space ethics varies with time and space so it depends. You have to see from different perspectives, yes, right? Definitely. I got a classic example dei pari like comment jeta unethical or legal katha le there could be an instance which you can say like it's unethical and at the same time it's not illegal as well kemiti amaro court practices re eta me dekh pariba ki like when somebody is defending a party and knowingly definitely knowingly somebody has done some wrong and his counterpart his like you know the counsel like when they put their case they selectively put the facts though they know the entire thing but they very selectively put the facts which will prefer to their client which will favor to their client so this is a good example of like it's unethical being you know the entire fact but you are choosing and subjectively you are putting a chunk of that part but this is again not illegal as well because there is no straight lines or no defined lines you have to put the entire thing obviously so that is another example like which goes on a daily basis in our like you know judiciary practices. So, all right, guys, today we discussed a lot about the ethics, starting from the moral to ethics and ethics to professional ethics. So, it's a basic idea we discussed today and collectively in our next session, we'll go forward little more detailed about the professional ethics with subject to judicial or legal studies. Till that time, if you have any questions, doubts, or if you want to put some concerns of your or any idea you would like to put forward, which we can take as part of like a professional ethics with legal studies, to suggest us. And thank you very much. Thanks for your time and patience for this session.